इनपुट इन्वॉल्व होते हैं। तो उन केसेस में प्रोडक्शन साइकिल, जो प्रोडक्शन टाइम है वो काफी लंबा हो जाता है, एंड हेंस जो आपकी फिक्स्ड जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो काफी टाइम तक टाइड अप रहेगी। Then another factor is credit allowed. Those enterprises which sell goods on cash payment basis need little working capital, but those who provide credit facilities to the customers need more working capital. Let's say मुझे raw material को सेल्स में कन्वर्ट करने में 20 डेज लगते हैं, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि दे कैन बाय स्टफ फ्रॉम मी ऑन क्रेडिट एंड दे कैन पे मी बैक आफ्टर लेट्स से 10 डेज। तो मेरा जो टोटल साइकिल हो गया वो कितने डेज का हो गया, 20 डेज का जो मुझे साइकिल प्रोडक्शन साइकिल हो गया, एंड 10 डेज जो मैं क्रेडिट फैसिलिटी दे दी। ठीक है, तो जो 20 डेज है मेरे पास कैश वापस आ जाता, अब वो कितने डेज में आ रहा है, 50 डेज। तो अब वो 10 डेज जो एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं उसके लिए भी मुझे वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा मेंटेन करनी पड़ेगी। तो हेंस जो कंपनीज क्रेडिट अलाउ करती हैं वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होती है दैन दी कंपनीज जो कैश बेसिस पे डील करती हैं। देन देयर इज क्रेडिट अवेल। सो इसका इंटायरली ऑपोजिट, कि अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, कि लेट्स से मैंने सप्लायर्स से रॉ मटेरियल ले लिया एंड आई कैन पे बैक देम आफ्टर 10 डेज। ठीक है, तो मुझे जो इमीडिएट पेमेंट करनी थी अब वो मुझे नहीं करनी है, मुझे वो 10 डेज के बाद करनी है। तो मुझे वो 10 डेज का जो एक्स्ट्रा बफर रखना था कैश का, अब मुझे वो रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड हेंस मेरी जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो कम हो गई है। ठीक है, देन देयर इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। जितना मैं एफिशिएंट होंगी रिगार्डिंग माय वर्क उतना ही बेटर होगा, बिकॉज जितने कम टाइम में मैं करूंगी, जितना कम वेस्टेज होगा, जितनी कम एरर्स होंगी, उतना ही बेटर, उतने ही कम टाइम में मैं अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाऊंगी, एंड हेंस जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। लेट्स से जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कुछ सीजन्स में ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर ईयर अराउंड अवेलेबल नहीं है तो मुझे उनको पहले से स्टॉक अप करना पड़ेगा फॉर द ईयर्स, जब फॉर द टाइम जब वो अवेलेबल नहीं होंगे मार्केट में। या फिर लेट्स से कि रॉ मटेरियल का बस दो ही सप्लायर्स है, तो जब भी उनके पास एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल होगा तो आई विल बाय इट फ्रॉम देम, बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। सो अगर रॉ मटेरियल ईयर राउंड अवेलेबल नहीं है तो मुझे स्टॉक अप करना पड़ेगा, एंड कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उस केस में ज्यादा। दिस इज अ रेपिटेशन ऑफ द अर्लियर पॉइंट, कल भी इससे बात लिखे गए। The 10th point is growth prospects. Growth prospects means the development of scale of business operations. The organizations which have sufficient possibilities of growth requires more working capital, while the case is different in respect of companies with less growth prospects. Obviously, जो growing companies होंगी वो अपने आप को expand कर रही हैं, उनके sales बढ़ रहे हैं, hence उनकी working capital requirement would be greater than companies which are stagnant. लेवल ऑफ कंपटीशन। सो अगर आपके प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, सो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आप अपने क्लाइंट्स को, आप अपने बायर्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी आपने प्रोवाइड करी या फिर क्विक डिलीवरी प्रोवाइड करी। तो ये सारी क्या ट्रिक्स हैं, ये सारे कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के ट्रिक्स हैं। और क्विक डिलीवरी क्रेडिट फैसिलिटी आप कैसे कब कर पाओगे, जब आपके पास सफिशिएंट कैश होगा, बफर कैश होगा। And then there is inflation. Inflation means rise in the prices. In such situation, more capital is required than before in order to maintain the previous scale of operations and sales. So अभी भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है लेकिन अभी कॉस्ट बढ़ गई है। ठीक है, प्रोडक्शन आपको रेवेन्यूज उतने हो रहे हैं बट कॉस्ट बढ़ रही है, एंड हेंस आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल या फिर कैश रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा पड़ेगी। Therefore, with the increasing rate of inflation, there is corresponding increase in working capital. I hope इसमें कोई problem नहीं है किसी को. These were pretty easy factors.
are the types of working capital. So basically, there are two types of working capital. First is permanent working capital and second is temporary working capital. अब डिफरेंस क्या होता है? कई बार बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे आपको अपनी वर्किंग कैपिटल परमानेंटली एंगेज ही रखनी है. Like below that level आप workout मतलब called as permanent working capital that they are required in the business any point of time. And temporary क्या है? Temporary आपकी fluctuate होती रहती है. जैसे अगर बिजनेस में डिमांड बढ़ती है तो वाली वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और अगर डिमांड कम है तो वर्किंग कैपिटल डिमांड कम हो जाएगी. So permanent working capital it is otherwise called as fixed working capital because it remains fixed. So even though it is a working capital, but it remains fixed with the business. Tandon Committee has referred to this type of working capital as hardcore working capital. Permanent working capital implies the base investing amount in all types of current resources, which is respected at all times to carry on business activity. So these funds are required at all types of business, no matter what the business situation is. Even if you are, जैसे कि लेट्स से अगर हमारा बिजनेस अच्छा नहीं वर्क कर रहा 2 मंथ से, तो क्या आप अपने एम्प्लॉयज को अपने लेबरर्स को फायर कर दोगे बिकॉज ऑफ दोस 2 मंथ्स? नो, because you know that cost of hiring would be far more greater than firing them, than the benefit which we are gonna get in firing them. ठीक है. सो आप उनको फिर भी सैलरीज फिर भी वेजेस देते रहोगे इवन तो आपका बिजनेस उस एफिशिएंसी से वर्क नहीं करता है. सो ये क्या हो गया? ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल है तो हमारी डिपेंडेबल कैपिटल की डिपेंड कर रही है आपकी वर्किंग पे. ठीक है. लेकिन स्टिल ये हमेशा रिक्वायर्ड है कि ये आपकी बिजनेस दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज परमानेंट. The value of current assets have been increased or decreased over a period of time, even though there is need of having minimum level of current assets at all times in order to carry on business activities effectively. Now coming on to temporary working capital, it is otherwise called as fluctuating or variable working capital. There is a close relationship prevailing between temporary working capital and the level of production and sales. So जैसे ही level of production बढ़ेगा वैसे ही आपकी temporary working capital भी बढ़ जाएगी. For example, raw material. Raw material is entirely dependent upon the production of the company. एक certain level of raw material हर company में होना चाहिए, but after that level रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे बिजनेस में इस टाइम पे कितनी प्रोडक्शन चल रही है. अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ जाएगी एंड हेंस योर टेम्पररी वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज. एंड अगर प्रोडक्शन कम है तो आपकी रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी कम हो जाएगा एंड हेंस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी. सो इट इज इन टाइप proportional to temporary working capital is proportional to the level of production and sales. There is no uniform production and sales throughout the year. If heavy order is received for production and there is large amount of credit sales, there is need for more amount of temporary working capital. At the same time, if production is carried on in an anticipation of demand in your future, temporary working capital is required. This is what I told you a few moments back. Now, अब इनको फाइनेंस कैसे करते हैं? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कैसे करते हैं? इसके लिए 3 अप्रोचेस है. There is aggressive approach, conservative approach and moderate approach. Aggressive approach is जहाँ पे आप part of your so an aggressive approach is more risky among working capital financing strategy. It doesn't assume to hold any reserves to cover spontaneous needs in working capital. It means that only some proportion of permanent working capital is financed by long-term financing and rest of the funds are met through your short-term borrowings. ठीक है. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो टाइप के फंड्स, दो टाइप के वर्किंग कैपिटल है, परमानेंट एंड टेम्पररी. सो यहाँ पे they are financing only a part of their permanent working capital through long term sources. बाकी के जितना भी पोर्शन बचा
like the remaining portion of your permanent working capital and your entire temporary working capital. इसको कहाँ से meet out कर रहे हैं? Through your short term borrowing. This is called your aggressive. ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर ये लोग फिक्स्ड या फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग से इसको फाइनेंस करते तो हमारे इंटरेस्ट रेट चार्जेस काफी बढ़ जाते. यस. तो इस वजह से वो रिस्क वो इंटरेस्ट एलिमेंट को हटाने के लिए कि इंटरेस्ट हम लोग को ज्यादा ना लगे, दैट इज व्हाई दे आर फाइनेंसिंग ओनली अ पार्ट ऑफ permanent working capital through long-term borrowing, rest of the permanent working capital and entire temporary working capital ये लोग कहाँ से फाइनेंस कर रहे हैं? थ्रू शॉर्ट टर्म बोरिंग. बट इसका एक डिसएडवांटेज है दैट शॉर्ट टर्म बोरिंग से फाइनेंस करने से रिस्क कंपनी पे काफी बढ़ रहा है. सेकेंड अप्रोच इज योर कंजर्वेटिव अप्रोच. कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है कि यू फाइनेंस the entire permanent capital and a part of your temporary working capital through long-term borrowings, and remaining portion of temporary working capital is financed through your short-term borrowing. इसका entirely opposite. उसमें क्या हो रहा था aggressive में कि only part of permanent working capital वो लोग finance कर रहे थे लॉन्ग टर्म बोरिंग से. यहाँ पे पार्ट ऑफ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग शॉर्ट टर्म बोरिंग. ये डिफरेंस है. इंटायरली ऑपोजिट है इसका. एंड इसके बीच में द कॉमन रूट इज मॉडरेट अप्रोच वेयर दे से कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग से फाइनेंस करो एंड जो आपकी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग से फाइनेंस करो. सो दिस इज द मिडिल रोड बिटवीन aggressive and conservative approach. Is that clear? Please write a yes or a no. This is important with regards to your MCQ question. I'm gonna ask questions tomorrow in the class. I'm gonna see कौन सा student answer कर रहा है. Now coming on to estimation of working capital. So there are two methods of estimating your working capital. The first is percentage of sales method, and the second is working capital based on operating cycle. काफी इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, आराम से करेंगे ये. सो परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल में कितनी रिक्वायर्ड है कितनी नहीं. सो इसमें हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने. वी कैलकुलेट दी हम लोग सेल्स के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल का रेशियो डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड इज वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग मेथड which is based on past relationship between sales and working capital. Just like technical analysis in stock market, it assumes that the history will repeat itself and thus the ratio of working capital to sales will remain constant. In other words, it assumes that the whole business will move in tandem with sales. So here what they are trying to say in जो रेशियो है बिटवीन कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए इन प्रोपोर्शन टू सेल्स डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द कंपनी. कि प्रीवियस ट्रेंड्स क्या रहे हैं उस बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी इन रिस्पेक्ट टू द सेल्स लेवल ऑफ अ कंपनी. अभी कैसे एस्टिमेट करते हैं? लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज estimate the total current assets as percentage of estimated net sales. ठीक है. पहले तो current assets का रेशियो निकाल लो in comparison to your net sales. Second step would be find out your current liabilities as percentage of net sales. फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में? current assets divided by net sales into 100.
परसेंटेज निकालनी है ना, करंट एसेट्स एज परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स. सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. हमारे पास दोनों की रेशियोज आ गई, करंट एसेट्स की भी आ गई, करंट लाइबिलिटीज की भी आ गई. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. हमारे पास यहाँ पे भी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आ गई, दोनों को माइनस कर दोगे, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दोगे, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा. दैट डिफरेंस वुड बी योर नेट वर्किंग कैपिटल एज परसेंटेज ऑफ सेल. न्यूमेरिकल देखो, लेट्स से हमारी नेट सेल्स है 10 लाख, हमारे करंट एसेट्स है 2 लाख के एंड करंट लाइबिलिटीज है 50,000 की. तो अगर मुझे करंट एसेट्स एज परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स कितने थे? 2 लाख एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेल्स कितनी है? 10 लाख. सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100 कितना आ गया? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100. हमारे पास आ गया करंट एसेट्स एज परसेंटेज ऑफ सेल, दैट कम्स आउट टू बी 20%. Similarly, current liabilities भी निकाल लेंगे. Current liabilities as a percentage of net sales would be current liabilities of 50,000, net sales are 10 lakh. So 50,000 divided by 10 lakh into 100 would give us 5%. Third step में क्या करना था? Difference find out करना था. तो 20% minus 5% is 15%. 15% किसका? 10 lakh का. Net sales के ratio में निकाल रहे हैं ना. So 15% of 10 lakh gives us 1,50,000. So this is our working capital which is required as percentage of sales. So this is your percentage of sales method. कि हम लोग working capital को estimate करने की कोशिश कर रहे हैं as percentage of sales. ठीक है? Is this clear? Okay, now we are going to find out working capital on the basis of its operating cycle. So the working capital operating cycle का यहाँ पे मतलब है total assets से. So the working capital to total asset ratio measures a company's ability to cover its short-term financial obligations. That is total current liabilities क्या company अपनी fulfill कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी. By comparing its total current assets to total assets. This ratio can provide an insight as to liquidity of the company. So working capital हम लोग operating cycle के basis पे कैसे निकालते हैं? We compare our total current assets to total assets. इसका ratio find out करते हैं. So अगर ये increasing है, that means we have sufficient current assets to meet our current liabilities. And अगर ये declining है, so that means the company can face losses because company के पास sufficient current assets नहीं है to meet out its current liabilities. Since this ratio can uncover the percentage of remaining liquid assets with total current liabilities subtracted out compared to the company's total current assets. Importance क्या है? An increasing working capital to total asset ratio is usually a positive sign showing the company's liquidity in improving over time. जैसे कि हमने previous ratio में निकाला था ना कि यहाँ पे percentage of sales मेथड निकाला था. So हमने पहले current assets to total sales निकाला, फिर current liabilities to total sales निकाला, फिर difference find out किया. अभी भी हमें यही करना है. The difference would be in the denominator. Net sales की जगह total assets आ जाएंगे. So total current assets divided by total assets. Okay. A low or decreasing ratio indicates the company may have too many total current liabilities, reducing the amount of working capital available. So अगर increasing ratio है, that means the company is doing good, company improve कर रही है and उसके current assets are greater than its current liability. And अगर decreasing ratio है, that means the company have too many liabilities and it can face losses in the near future. Is this clear to everybody?
Okay, this marks the end of your chapter. अब आपका बस एक चैप्टर बचा है, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. वो हम कल की क्लास में करेंगे. I'm just sharing the link also. Please wait for a second. पारस, तेरी क्लास मेरे से बंद हो गई. ले ना चादर. नहीं चादर चेंज करने लगी तो हिल गया. कुछ भी नहीं हुआ, ठीक तो है. बंद क्यों हो गया? Thank you so much, students. Bye bye.